out tonight. I know it's very short notice, but it was really important that we came out and sent a clear message to the authorities that we aren't going to accept that level of police brutality. Everyone will have seen that video and been shocked that the police could treat a Muslim family in that way. It was unacceptable. And it मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर होने वाले पाकिस्तानी फैमिली के साथ तशद्दुद के वाक़या पर बरतानिया भर में गम व गुस्सा की लहर जारी है और वाक़या के बाद पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। याद रहे कि 2 रोज़ कबल मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर रशडेल की एक पाकिस्तानी मुसाफिर फैमिली पर पुलिस ने भी बहीमाना तशद्दुद किया, जबकि 2 नौजवानों को ऊंधे मुंह ज़मीन पर लटाकर काबू करने के बावजूद उनके मुंह और सर पर ठुड्डे मारे। इसके अलावा पुलिस ने टीज़र गन का इस्तेमाल भी किया, जिसके बाद बरतानिया की पूरी कम्युनिटी पुलिस के रवैये और पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज शुरू कर चुकी है। जवाब में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने 7 पुलिस अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, जबकि 1 पुलिस अफसर को मुअत्तल और 6 को पुलिस ड्यूटी से रोक दिया गया है। गुज़श्ता रात मैनचेस्टर की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वाक़या ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम के दफ्तर के बाहर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें एशियाई व मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मुकामी कम्युनिटी और यहूदी कम्युनिटी ने भी बड़े जोश व खरूश से शिरकत की। मुज़ाहरीन ने हाथों में पोस्टर और बैनर उठा रखे थे, जिन पर ये नारे दर्ज थे: ब्लैक लाइफ मैटर्स, वी वांट जस्टिस, सर्व एंड प्रोटेक्ट मीन्स ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस विल स्टम्प इन हेड। कम्युनिटी की खिदमत करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के लिए मतलब ये है कि उनके सरों को तोड़ दिया जाए। नो जस्टिस नो पीस, फाइट अगेंस्ट रेसिज्म एंड फाशिज्म एंड इस्लामोफोबिया, स्टैंड अप अगेंस्ट रेसिज्म। हाज़रीन जोश व खरोश से यही नारे लगा भी रहे थे। कई हाज़रीन गज़ा में जंग बंदी के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, जबकि मुज़ाहिरीन ने जो बैनर उठा रखे थे उन पर इसराइल के मुखालिफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे भी शामिल थे, जिनमें स्टॉप द वॉर इन गज़ा। कई एहतजाजी मुज़ाहिरीन फ़लस्तीनियों के स्कार्फ़ भी सरों पर रखे हुए थे। इत्तेहाद में यहूदी कम्युनिटी ने भी गज़ा के मामले में इसराइली पॉलिसी की मुखालफत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने अपनी तकारीर में पुलिस गर्दी की शदीद मज़म्मत की और वाज़े किया कि अवाम के टैक्स पर पलने वाली पुलिस फोर्स को कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नाजायज़ ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाज़ मुज़ाहिरीन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मार्च करते हुए सेंट पीटर स्क्वायर में टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और वहाँ पर एहतजाज करते रहे। इस दौरान मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने ख़िताब करते हुए ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के रवैये की मज़म्मत की। मुज़ाहिरीन इसके बाद भी नारे लगाते हुए टाउन सेंटर में मार्च करते रहे, हत्ता कि उन्हें बतौर एहतजाज कई ट्रामों को भी रोके रखा। दरी असना रिपोर्ट मिली है कि पुलिस की इंक्वायरी कमेटी के अरकान ने मुतासरा ख़ानदान के साथ मुलाकात की और इंक्वायरी के तरीक़ाकार के मुतल्लिक़ वाज़े किया। अलावा ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के चीफ ने मुकामी काउंसलरों के साथ एक मीटिंग भी की, जिसमें काउंसलरों ने पुलिस चीफ पर वाज़े किया कि कम्युनिटी को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पुलिस चीफ ने इस वाक़े पर होने वाली कार्रवाइयों से काउंसलरों को आगाह भी किया। मुज़ाहरे में गो मुकामी पाकिस्तानी नज़ाद काउंसलर भी थे, मगर उन्होंने मुज़ाहिरीन से खिताब करने या स्पीकर टीवी को अपने तासुरात देने से मादरत करते हुए कहा कि चूँकि मैनचेस्टर सिटी काउंसिल का मौक़िफ़ उनकी लीडर बयान कर चुकी हैं, इसलिए वो इस मामले में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते। साथ ही रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर टीवी, मैनचेस्टर। One rotten apple, but because the Greater Manchester Police Force is institutionally racist, yet we rarely talk about that context. Just last month, pro-Palestinian demonstrators in Manchester were also assaulted by the police. Their crime, standing against a British-sanctioned genocide in Gaza. We say enough. The same racism that prevails against our people in Palestine is the same racism against our people in America and the same racism in this country. That is why when a hospital gets bombed in Gaza, there is no upheaval, but if it happens in Ukraine, it is condemned. That is why when our people Yesterday when we spoke to Greater Manchester Police, they dismissed Greater Manchester Police any attempt to independently investigate this incident. And not only that, they refused to refer it to the Independent Office of Police Conduct. Do you remember the first statement? They said we're going to send it to the Professional Standards Authority, the internal police officers
investigating police officers. So we told them yesterday that this was unacceptable. I come from Rochdale. I'm on my way tonight after I finish here to meet with that family. That family that's been traumatized by brutality, that's shown the worst of our police forces in this country. And when you look at the institutional racism, the structural racism that exists within our societies, we ask ourselves the question. And to Andy Burnham, I say this: thank you. Thank you for listening to our community. Thank you for ensuring that it was referred to the Independent Office for Police Conduct. But we will not remain silent until there is justice. Yes. Every time Tommy Robinson tries to organise, we fight back and push him back. But every time we push him in the gutter, politicians attack migrants, refugees, Muslims, black people, pro-Palestine campaigners, and they give confidence to the far right. That's why he's marching against in London. And it's so important that we recognise the connection between what happened at the Manchester airport, where police officers, basically thugs in uniform, can attack black people and Muslim people. It's not a surprise that the likes of Tommy Robinson think they can take to the streets. I just want to say that today I'm here joining these people as one human race, standing against racism. Britain is systematically racist, and as a British Pakistani, I have faced this pretty much all of my adult life. It's not good enough that the police force, who is meant to protect and serve us, is treating people from the British, Asian and ethnic minority and black communities with such force. Enough is enough. Too many people have been killed by the police. They should be protecting us. We want to live in peace. Let us live. We are one human race. My views are that was not an accident. That is normal conduct of the police. They think that is acceptable. That is a normal arrest for them. Nothing wrong was done. They were not scared that there's cameras in the airport, that they're being filmed by passengers, by pedestrians. They carried on conducting that arrest in that fashion. Why is it that the police are the most racist officers? No other emergency service has that many racists in it. Yeah, that is what I want to say. Thank you. ठीक है, हम इधर खड़े हुए हैं मैनचेस्टर की सिटी में, और हमने देखा है वीडियो में जिसमें पुलिस ऑफिसर वायलेंटली दे हैव बीन एग्रेसिव, इसको मारा था, इस बच्चे को, इस बेचारे को, और इसलिए हम आए हैं उनको दिखाने के लिए, पुलिस को बताने के लिए कि ये अच्छा नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम खड़े होंगे, हम जो जितने भी हैं, हम एथनिक माइनॉरिटीज, ब्लैक, and other ethnic minorities, low South Asians, it's not right for the police to be aggressive like this. They need to be there to protect us, not intimidate us, not be aggressive with us, not be violent with us. So this is a call to the police to investigate, to do something about this, and inshallah, hopefully we can come to a resolution of this situation. Thank you. 3 months ago, a homeless person was dragged out of his tent here in this square and stamped on so badly by a police officer he had to go to hospital. A month ago, for a Gaza demonstration, they threw one kid over a barrier and they punched somebody else in the face. This is not a one-off. This is GMP in their true colours. And it's not one guy either. What about the 6 other officers standing around watching him do it? That's my opinion there. ये जी कोई नई बात नहीं है, जो नस्ल परस्ती है ना, वो यहाँ कूट कूट कर भरी हुई है। इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म भी है यहाँ पे, नस्ल परस्ती और खुलेआम भी हमें नजर आती है। और ये वही वाकया है, आपने नोट किया, 5-6 सफेद चमड़ी वाले नस्ल परस्त पुलिस वाले, उन्होंने जो एशियाई बाशिंदे उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर ताकत इस्तेमाल की बिला वजह। बंदा ऑलरेडी जमीन के ऊपर लेटा हुआ है और आपने उसको टेजर कर दिया है, तो फिर उसकी वजह से क्यों आप उसको मार रहे हैं? तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि हर इदारे में यहाँ पे नस्ल परस्ती है, इस्लामोफोबिया है, यहाँ पे मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इन्होंने अपने चीले छोड़े हुए हैं, जैसे टॉमी रॉबिन्सन इंग्लिश डिफेंस लीग वाला, जैसे फराज, नाजिल फराज, ये लोग फिर सैटरडे को लंदन में मुजाहरा कर रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। इनको ये जो वाकया हुआ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, it's not acceptable totally. I was in the police meeting for 2.5 hours this morning in the North Manchester with many councillors and the community, Muslim community people. We condemn this brutal attack, and the police chief
or the inspectors were saying this morning that the 3 police officers were, one lady had a nose broken and etc. And I questioned them. There's a cameras outside, so obviously you could have stopped all this. Why, in front of their mother, kick these people about like football? That's not acceptable. So therefore, we condemn this, and this needs to be stopped. And all the police officers, not one who was suspended today, they should be all sacked. Right away, should be sacked. We are not going to accept that. It's a racism within the police. Other communities, they get preference and they are given them police protection, but the Muslim community does not get the police protection. So this needs to be sorted immediately, and also the chief constable needs to sort this mess out, and the racism within the police force and the other forces as well. Thank you. I just think it's another time for people to get together again, and it keeps happening over and over and over again. And every time they say it's going to change, but it never does. McPherson report nearly 30 years ago, nothing's changed. ये जो प्रोटेस्ट हो रही है, ये मैनचेस्टर पुलिस के खिलाफ हो रही है, और जो पुलिस ने एयरपोर्ट पे किया बहुत ही बुरा किया, और इसके बहुत बुरे असरात निकलेंगे। और हम जो मुसलमान हैं, खुसूसी तौर पे पाकिस्तानी जो हैं, इनको बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करने के लिए निकलना चाहिए। तो रेसिज्म की जो पॉलिसी जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस में डर आई है, हम इसके खिलाफ आए हैं कि भाई ये कोई रवांडा नहीं है। ये जो 4-5 पुलिस वालों की वजह से जो मैसेज दिया गया है पूरी दुनिया में कि बरतानिया जो है, बरतानिया में जो लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है, ये मतलब ये पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। तो ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये सोशल वेलफेयर स्टेट है, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो हम जिस मुल्क में यहाँ रह रहे हैं, ये मुल्क जो है इसमें इंसाफ है, इसमें नफरत नहीं है, इसमें तमाम कम्युनिटीज के साथ मिलके जीने का एक तरीका दिया हुआ है। तो उसको पामाल करने का जो पुलिस ने किया है, उसकी हम मजम्मत करते हैं, और हम इस कम्युनिटी के साथ और इस फैमिली के साथ मुकम्मल तौर पर शाना बशाना खड़े हैं। We're here today because there was an incident at Manchester Airport where an Asian man who was evidently Muslim because his mother was wearing a hijab was restrained on the floor, his hands behind his back, his face on the floor, and the police decided, a policeman approached him, kicked him in the face with a boot, and then stamped viciously upon his head. There was no reason for him to do that. The man was restrained. We have not been told by the police what occurred for him to have been restrained in the first place, but it does seem that it was just a small altercation, and the police have acted in a very aggressive and barbaric manner. The other thing that has happened is that obviously the police have not seemed to, this police officer, despite being recorded, despite knowing there's cameras around, he didn't care. He seems to want to have acted with impunity. Instead of being arrested for his actions, he has now, over 24 hours later, now been suspended. Suspensions means you're on your full pay while they're investigating. However, we believe this to be a crime, a racist crime, and it should be treated as that. And our problem today and why we're here today is the increase of the racism that the police are showing to Muslim and Asian communities in the UK, because they have shown solidarity with Palestine. We have been attacked at peaceful protests, and now whilst restrained on the floor, we are having our heads banged in, stamped on. This is not a country that is respecting the law. The law does not allow this criminal behaviour, and we will not stop until we get justice, and that means the law applying to everyone and no more racism in our police force. नाजरीन, आज आपने देख लिया कि डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है पुलिस के रवैये के खिलाफ, और ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के इस रवैये को एक्सेप्टेबल करार नहीं दिया जा रहा। आप देख लें कि तमाम कम्युनिटी के लोग इधर आए हुए हैं, जिसमें मुसलमान, जूश, क्रिश्चियंस और तमाम दीगर रिलीजन और तमाम पार्टियां और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। उनका ये काम नहीं है कि लोगों को पकड़कर मारना और फोर्स का आउट ऑफ वे होकर इस्तेमाल करना, और इस बारे में वो कंसर्न है और चाहते हैं कि इसका कोई अजाला किया जाए। इसके अलावा एक और बात कह दूं कि मैनचेस्टर के काउंसलर्स ने इस बारे में अपने तासुरात देने से माजरत की है। उनका कहना यह है कि उनके तासुरात और उनका मौक़िफ़ उनके लीडर जिनको बयान कर चुके हैं। कल सुबह पुलिस चीफ की काउंसलर्स और कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग हो रही है, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। साथी रिपोर्टर चौधरी परवेज मसीह मट्टू के हमरा महबूब अलाही भट्ट, स्पीकर टीवी, मैनचेस्टर।